Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. So, what we are learning today is the rise of new religion. Okay, so just calm down. See the introduction part. About 2,500 years ago, that is 2,500 years ago, many new philosophies came into existence that were different from Vedic philosophy. Gautama Buddha and Mahavira were the beginners of new philosophies. Their life and preachings are discussed here. Along with this, the functioning of the 16th Janapadas and other republic that were in the plains of Ganga and Sindhu river are also explained. Okay, so let's see the lesson. Why did the new religion emerge? Emerge का मतलब है फैलाना, फैलना. Okay. During the Vedic period के time, the rituals like yaga and yagna needed animal sacrifices, right? जब ये कौन से भी जो फेस्टिवल्स करते थे हिंदूज, वो लोग यज्ञ करते थे. कुछ भी शुरुआत करने से पहले क्या है, यज्ञ करके एंड सैक्रिफाइस एनिमल, कुर्बानी देते थे. दिस अफेक्ट द फूड प्रोडक्शन. उसके जरिए से क्या है, वो यज्ञ इतने होते गए जिससे एनिमल्स की जो भी क्वांटिटी थी वो लेस होते गई, insufficient हो गए. Apart from this, food grains like milk and ghee were also offered as हवेशु and burned in the fire, which resulted in the shortage of food. और milk, ghee ये सब ऑफर करने से क्या हुआ, food की shortage होने लगी. Okay, people had also believed that the one through this yagnas through liberation, mukti, liberation means mukti possible. ये करने से क्या है, कौन सी भी चीज की मुक्ति मिल सकती है, ये सब बिलीव था उन लोगों को. बट दिस कॉस्टली रिचुअल्स वे बियॉन्ड द मीन्स ऑफ कॉमन पीपल. जो रिच है वो कर सकते थे, अब जो पीपल पुअर है, जो कॉमन पीपल है, उन लोग कहाँ से लाएंगे इतना सब करने? ये दे कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट. दिस रिचुअल्स वे कंडक्टेड बाय द रिसाइटिंग संस्कृत श्लोकास. तो वो लोग क्या है, यज्ञ वो करते करते कुछ पढ़ते हैं. देखिए आप लोग लाइक मोस्टली देखे होंगे, यज्ञ करते करते कुछ मंत्र पढ़ा जाता है, तो वो श्लोका, उसको श्लोकास बोलते हैं. वो पढ़ते पढ़ते वो लोग स्टार्ट करते हैं. संस्कृत, वो भी संस्कृत में पढ़ते हैं वो श्लोकास. ओके, संस्कृत वॉज द प्रीस्ट लैंग्वेज एंड द कॉमन पीपल वे अनेबल टू अंडरस्टैंड इट. सो इट वॉज अ प्रीस्ट लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज थी, बट कॉमन पीपल क्या है, वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे. पीपल वे इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिंपल पार्ट ऑफ liberalization that was explained in their own language. So they cannot understand that language, the Sanskrit language, the shlokas what were reciting in the Sanskrit language. So they are expecting a simple path that was explained in their own language. They can get that explanation in their own language. Okay, so due to Varna system, social disintegration set in. Okay, this led to the social discrimination, bhedbhav came to this existence. The priestly class of that time, Brahmins, had many luxurious. Meanwhile, Kshatriyas start becoming powerful. As a result, republic emerged. So ये टाइम पे क्या है, जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत लग्जरियस थे और जो क्षत्रियास थे वो पावर में आने लगे. That emerged Kshatriyas to become the reason of emergence of new religion that were against the Brahmins. So Kshatriyas का एक new religion found करे, that was against the Brahmins. Okay, around 2,600 years ago, due to all this reason, there were 62 new religion. ये सब होने के बाद 2,600 years ago के बाद क्या हुआ, न्यू रिलीजन्स फाउंड होने लगे. How many? 62 new religions have been found. Buddhism and Jainism are the important among them. Buddhism और Jainism क्या है, वो important थे. Gautama Buddha was the founder of Buddhism
and Mahavira was the important Tirthankara of Jainism. Both